आज हमारे साथ है बहुत ही खास मेहमान जो लिथुआनिया के एम्बेसडर है डियाना। लिथुआनियन भाषा और संस्कृत काफ़ी नज़दीक है, बहनें हैं। मैं कौन सी गाँव से आए और मैंने जवाब दिया दिल्ली से आए और उन्होंने थोड़ा हम काफ़ी नेचुरल रिस्पॉन्स था, हाँ दिल्ली से, बाप रे। ज़्यादा मुश्किल नहीं है क्योंकि इंडो यूरोपियन लैंग्वेज है, मेरा मातृभूमि भी इंडो यूरोपियन है, लेकिन सचमुच फरातेदार हिंदी में बात करना तो आसान नहीं है, बहुत मेहनत करनी है। हरिवंश राय बच्चन का कविता डिस्कवर किया। अच्छा। और ये मेरा क्रेज है, ये हमें पागल हो गई। अरे वृक्ष हो भले खरे, हो गने हो बरे, एक पत्र चांबे, मांग मत मांग मत मांग मत, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। हाँ, मैं कोशिश करूंगी इससे अच्छा सीखना जी। हर बार मैं इंडिया आती हूँ महसूस हो रहा है कि ये मेरा घर है। As simple as that। मैंने मेरा पहला इंडियन मूवी देखा और मैडम एक चीज प्यार हो गया। अच्छा, प्यार हो गया। Between Amitabh Bachchan and Dharmendra, I'm very old-fashioned, but I think it's a classic switch. उमराव जान। उमराव जान, आपको बहुत अच्छी लगती है उमराव जान। चलिए, ये मेरा पहला इंडियन फिल्म है। I told him, sir, you are responsible for me coming to India and remaining with India. नमस्ते, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। मैं हूं हर्षित जोशी और आज हमारे साथ है बहुत ही खास मेहमान जो लिथुआनिया के एम्बेसडर है डियाना। मैडम, स्वागत है आपका न्यूज़ 18 पर। नमस्ते। एक बहुत खास बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैडम की हिंदी बहुत अच्छी है। मैडम को हिंदी और संस्कृत का ज्ञान है और आज हम मैडम से बात करेंगे FTA पर, जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है इंडिया और यूरोप के बीच। सबसे पहले मैडम मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपने हिंदी कहाँ से सीखी? पहले मैंने यूनिवर्सिटी में सीखी थोड़ा सा, फिर मैं इंडिया आई और यहाँ पे बाज़ार में सीखी। अच्छा, बाज़ार में। पहले तो बाज़ार, अभी तो मैं टीचर के साथ सीख रही हूँ। अच्छा। लेकिन मेरी पहली पढ़ाई तो हाँ स्ट्रीट में थे। अच्छा, तो वहाँ से ही और आपने मूवीज़ देखने में और हाँ रहने में, इंडिया में रहने में। तो बॉलीवुड की मूवी आप देखती रहती हैं? तो कविताएं और जो कहते हैं ना गाने हिंदी, कविताएं मेरे ज़िंदगी में थोड़ा बाद आई। पहले मेरा इंडिया से प्रेम मूवी से आया। अच्छा, मूवी से आया पहला प्रेम। मैंने ये बचपन से ये लगाव मुझे आया। मैं एक छोटी सी लड़की थी, 11 या 12 साल की थी, जो मैंने मेरा पहला इंडियन मूवी देखा और हाँ मैडम एक चीज प्यार हो गया। अच्छा, प्यार हो गया। चलिए, तो हिंदी सीखना कितना कठिन है, कितना मुश्किल है हिंदी सीखना? आसान नहीं है क्योंकि प्रैक्टिस चाहिए, हर दिन कुछ करना चाहिए। ज़्यादा मुश्किल नहीं है क्योंकि इंडो यूरोपियन लैंग्वेज है, मेरा मातृभूमि भी इंडो यूरोपियन है, लेकिन सचमुच फरातेदार हिंदी में बात करना तो आसान नहीं है, बहुत मेहनत करनी है। लेकिन आप विश्वास कीजिए, आपकी हिंदी बहुत अच्छी है। जो हमारे दर्शक है वो आपको देखकर काफी खुश होने वाले हैं। लेकिन मैं खुश रही हूँ, हर दिन थोड़ा सा सीख रही हूँ। तो कितने साल हो गए आपको हिंदी सीखते हुए? 30 से अधिक साल हो गए। 30 से अधिक। ऐसा कहा भी जाता है कि जो लिथुआनिया है वो संस्कृत भाषा के काफी करीब है। हाँ, ये सच है। लिथुआनियन भाषा और संस्कृत काफ़ी नज़दीक है, बहनें हैं। ग्रामर और वोकैबुलरी भी बहुत मिलती जुलती है। और हाँ, ये मेरे लिए राजदूत के तौर पर मुझे ये इंस्पिरेशन देता है हमारे संबंधों को, हिस्टोरिकल संबंधों, प्राचीन संबंधों को मनाने के लिए
और हाँ फ्यूचर के लिए देखने के लिए। एक सवाल मेरा था, जब आप इंडिया आई होंगी तो आपने कहा मैं बाज़ार में जाती थी, तो बाज़ार में जब जाती होंगी आपने हिंदी बोली होगी, तो क्या जो एकदम वो कहते हैं ना कि जो हमारे भारतीय हैं वो एकदम शॉक्ड होंगे ना आपको देख के कि मैडम को हिंदी आती है? हाँ बिल्कुल, ऐसा कोई बिल्कुल सरप्राइज, नॉर्मली सरप्राइज आ रहा है सारे लोगों से। लेकिन हम फॉरेनर्स जो भारत में रहते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। ये मुझे लगता है कि ये और गहराई से जानना, इंडिया जानना मौका देता है, और मेरे जिम्मेदारी में भी जिम्मेदारी निभाने में मदद देता है। कोई ऐसा इंसिडेंट बता सकते हैं जिस पर आप बहुत हंसी हो कि अरे वो मेरे को मेरी हिंदी देखकर वो एकदम शॉक्ड हो गया, कुछ है ऐसा वाकया? जी, लेकिन हाँ दूसरे अफसर थे जो ऑपोजिट रिजल्ट था। हाँ एक बार मैंने महाराष्ट्र गई और एक आदमी था, उन्होंने मुझे पूछा हिंदी में मैं कौन सी गाँव से आए, और मैंने जवाब दिया दिल्ली से आए, और उन्होंने थोड़ा काफी नेचुरल रिस्पॉन्स था, हाँ दिल्ली से, बाप रे। तो द फीलिंग वाज दैट मैं लोकल हूँ, हाँ दिल्ली गाँव से आए। वो कहता ना कहाँ से है, तो एक मूवी के अंदर भी दिल्ली से हूँ, तो ऐसा वाकया दिल्ली से आए। हाँ तो कुछ गानों का या कविताओं का शौक है, आप हमारे दर्शकों को सुना सकती हैं? 3-4 साल पहले मैंने हरिवंश राय बच्चन का कविता डिस्कवर किया। अच्छा। और ये मेरा क्रेज है, ये हमें पागल हो गई। अरे तो मुझे मधुशाला बहुत पसंद है, लेकिन ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड कविता है। ये दूसरा जो आसान है लेकिन इतना सुंदर और ज़रूरी है, अग्निपथ। अग्निपथ। एक तो 2-4 आप कुछ लाइन सुना सकती हो तो? एक अग्निपथ की और एक मधुशाला की। कौन दोनों सा? सुनाइए ना, हमारे दर्शक तो खुश होंगे। बिल्कुल समय है। बिल्कुल समय है, बिल्कुल समय हमारे पास। वृक्ष हो भले खरे, हो गने हो बरे, एक पत्र छाम भी मांग मत, मांग मत, मांग मत। अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। मधुशाला, ओके मधुशाला। मृदु भवों के अंगूरों के आज बना लाया खाला, प्रियतम अपने हाथों से आज पिलाऊंगा प्याला। पहले भोग लगा लूं फिर तेरा प्रसाद जग पाएगा, सबसे पहले तेरा स्वागत करती मेरी मधुशाला। बहुत सुंदर। देखिए ना, मैडम को मधुशाला भी आती है, अग्निपथ भी आती है, हिंदी इतनी अच्छे से बोलती है कि कोई सामने भारतीय हो तो एकदम मतलब लगेगा नहीं कि मैडम यूरोप से हैं, ऐसा लगता है कि हमारे बीच की हैं। जैसे इन्होंने कहा ना, महाराष्ट्र में जब ये गई थी तो किसी व्यक्ति ने पूछा कि आप कहाँ से हैं, तो इन्होंने बोला मैं दिल्ली से हूँ। तो मुझे भी ऐसा ही लग रहा है कि मैडम से बात करते हुए कि मैं किसी यूरोपियन एम्बेसडर से बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि अपनों से ही बात कर रहा हूँ। तो मैडम बहुत अच्छी हिंदी है, मतलब मैं भी बहुत खुश हुआ। हाँ, मैं कोशिश करूंगी इससे अच्छा सीखना। जी मैडम, आप यूरोप से आती हैं, आप एम्बेसडर हैं। भारत और यूरोप के बीच अभी फ्री ट्रेड डील हुआ है। जो ये ट्रेड डील है, इसको कहा गया मदर ऑफ ऑल डील। ये भारत और यूरोप के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, इससे क्या बदलेगा? ये वाकई ये ऐतिहासिक एग्रीमेंट है। ये हमारी साझेदारी का गेम चेंजर है। I think well, it took us 19 years, 19 years, but I think it was worth it because I think both sides gave each other, first of all, the preferential treatment, the commitments to cut the tariffs, but also, beyond the tariffs, to create conditions, favorable conditions for each other's businesses in trade, in goods and in services. But everybody has, who has been partial to the process, emphasized that it's much more than just a tariff or trade-related agreement, because it also expresses on both sides, gives the expression of trust.
which I think it should push for more goodwill, for more attention to each other's markets, to attention to each other's, businesses, cultural relations. So it's definitely that historic a milestone. And I think the European leaders, but also Prime Minister Modi ji, have emphasized that it goes much, much beyond trade. It remains for us, of course, to read the text. The text is not yet made public because it's a massive text which still is undergoing the legal brushing. But it has already given a lot of confidence to us. We have, for example, received many calls from Lithuanian businesses inquiring. Suddenly, it suddenly gives that confidence that you can go to India, you can look at India's market. You trust each other more with such agreements. And first of all, trust is very important before you start any relationship. But second, I think it will also give other players, trade players in the world, that boost to look in the direction of more free trade and to more, rules-based trade. So I think it's historical on many accounts. जो भारत और यूरोप का ट्रेड डील हुआ है उसके अंदर जो व्यापार है, जो एम्प्लॉयमेंट है, सब कुछ है, वो कितना बढ़ जाए? क्या लगता है कितना रोजगार, मतलब जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होने वाला है? Well, there are many European businesses in India. They are creating a lot of jobs here. And the same about Indian investment in Europe. And while this agreement is strictly speaking not investment agreement, there is a separate agreement on investment, but it does generate flows which actually create jobs. So definitely this is going to contribute to job creation in India, but also in Europe. I mean, it's very much, I think, on par. The reason why it took so long, probably because both sides were very conscious of what they wanted to achieve. And Europeans have also been saying that we don't want the deal for the sake of deal. We want the deal for the sake of actually, easing and promoting our connections. The same was on Indian side, and I think it was difficult to reach the agreement, but it makes it even more historical. बहुत सालों से भारत और यूरोप के बीच FTA को लेकर बातचीत जारी थी. हालांकि जो डील होती है उसके अंदर काफ़ी बैकडोर्स बात होती है, लेकिन फिर भी मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जो बैकडोर्स बात होती है आखिर ये कैसे सफल हुई इतने सालों बाद? It was coming to that, many people want to project it as a result of today's geopolitical circumstances, and I guess your question also implies that. But what I want to say is that I think the biggest boost given to trade was last year in February when, it was an unprecedented visit of the whole EU college, which means like EU government, like all commissioners, which is something that corresponds to a minister in the government, came to India, and I was part of that visit, and we saw that unprecedented, it was just February last year, and I remember this, barish ho gaya, there was unexpectedly the rain, which normally should not happen in February. So your Minister of Commerce, Mr. Piyush Goyal ji, and European ministers, we were all soaked in rain unexpectedly while having a dinner and a cultural show in Purana Kila, but everybody was joking that this barish is really, it's very, very good. It brings us luck, and it actually brought us a lot of understanding and a lot of luck, probably. But probably, I think it's wisdom, it's common sense and wisdom which prevailed between the two biggest markets of the world. That you have to mind the size also. The European Union is about 400 million at least of quite well earning, customers and consumers. Indian market, of course, is very famous for its size, which roughly corresponds, in for that matter. So it is really historical because two greatest traders of the world have struck the deal. देखिए, जिस तरह से जो एम्बेसडर रेडियाना, उन्होंने कहा कि जब ट्रेड डील हो रही थी तो उस समय जब यूरोपियन यूनियन के तमाम नेता भारत आए हुए थे, तो जब ट्रेड डील हुई तो
बारिश से उनका स्वागत हुआ। मतलब कह सकते हैं कि स्वर्ग और आसमान के देवताओं ने भी स्वागत किया कि बहुत अच्छा काम किया। मतलब ये बहुत अच्छा पॉइंट है जो मैडम ने बताया कि मतलब जो हमारे देवता हैं उन्होंने भी स्वागत किया कि आप ये दुनिया में बहुत अच्छा काम करने जा रहे हैं, जिस तरह से भारत और यूरोप साथ है। इसी के बाद मैं आपसे दूसरा सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से अभी टैरिफ वॉर चल रहा है पूरी दुनिया में यूएस का, तो उसके अंदर भारत और यूरोप कैसे दुनिया की मदद कर सकते हैं, व्यापार में कैसे स्थिरता ला सकते हैं? Well, first of all, as I said, I would not tie this deal to the tariff war, because I think it was brewing, it was on the coming. But of course, between the two biggest trading blocs, the agreement has been stricken, which is based on very transparent and very mutually agreeable conditions. I think it's historical, I think Prime Minister Modi ji has called it a blueprint for the world's prosperity, for the shared prosperity that we have. And the President of Commission, Madam Ursula von der Leyen, called it mother of all deals, which means that as a deal, it will definitely serve others as an inspiration and definitely will contribute to stability of the world. मैडम, जिस तरह से दुनिया में युद्ध चल रहे हैं, कह सकते हैं रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है, उससे जो तेल आपूर्ति है, ऊर्जा की आपूर्ति है, उस पर काफ़ी प्रभाव पड़ा है। इस पर यूरोपीय संघ और लिथुआनिया की क्या रणनीति है? Well, definitely for us, the greatest changes in Europe, geopolitical turbulence started 4 years ago. In fact, yesterday we marked a sad fourth anniversary of Russia starting the war against Ukraine. So this was a turning point where we, woke up one day in Lithuania realizing that, the peace is no longer taken for granted, that our neighbors barely 500 kilometers down from our border are in fact experiencing a massive invasion. Of course illegal, of course against all the commitments given by Russia, back 30 years ago when they committed to serve as guarantors of Ukrainian territorial sovereignty. And then we also witnessed that unprecedented, propaganda war, trying to persuade the rest of the world that it was Ukraine or NATO or the West which provoked it. So of course, you have to completely rearrange the way you look at the world. And, thanks God, Ukrainians have been incredibly resilient. 4 years down the lane, they are fighting and they are not ready to surrender and lose their territories, and Russians are not winning. So in fact, it's definitely the time for us to reflect on what has happened, to really discard the old, absolutely ungrounded talking points by Russia that it was somehow provoked, that Russia has been made victim and so on. I mean, now down the lane we know this was not true. No Nazis in Ukraine. That needed to be addressed, and we really need to team up to tell Russia that it's, of course, in our interest, but first of all, it's in their own interest to finally go back to their borders and start taking care of their own problems rather than solving problems abroad and, bringing havoc to whole of Europe and to a larger world. जिस तरह से तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव आप देख रहे हैं दुनिया के अंदर, भारत एक आयात करता है तेल को, तो जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है उससे भारत को कितना लाभ हो सकता है? Of course, energy security is extremely important. It's crucial to every country, and including Lithuania. We have had our own strategy. Our problems with energy sovereignty and energy independence started much, much before Russia started the war. That's why I think we took it very seriously, and we were able to actually stop import of Russian gas and oil completely, just as they started the war, because we had built over time the liquefied gas terminal, which allows us to have this import diversification from wherever we want to buy. But I think if you ask me, of course we know that with the climate change, acquiring a certain speed and threatening, including India, with very disastrous consequences, it needs to be addressed. I think green transformation and green energy is the only answer to that. There will also be flows of fossil fuels,
but the curve is definitely down. So in today's circumstances, every country, is trying to diversify the supplies, and definitely dependence on one source, and especially on the source which is so volatile as Russia is not good for anyone. As I said, we have stopped it immediately. And I'm very happy to say that in a short while, last year we've received the statistics that close to 80%, that is 76, I think, percent of energy produced in Lithuania already comes from renewables. I know that India is also at a, incredible speed. It's moving to green fuels, and this green transformation is acquiring, incredible scope. I have visited some solar parks and wind parks, and I mean, really have done impressive developments in that sense. But also cooperation between Europe and India, between Lithuania and India in the green transformation areas, in green hydrogen, in solar, in wind, really needs to speed up to contribute to solving that energy dependency and the problems that have been created by these fluctuations of oil and gas prices. ओके भारत के अंदर अभी हाल ही में एआई समिट हुआ, आपने देखा होगा जिस तरह से, आपने भी देखा होगा 3-4 सालों में किस तरह से दुनिया चेंज हो रही है एआई के थ्रू। इतने ज़बरदस्त चेंजेस एआई के हमारे सामने एक तरह से चैलेंजेस भी हैं, और इससे हम क्या क्या फ़ायदा ले सकते हैं। तो आप एआई के बारे में क्या सोचती हैं, भारत और यूरोप कैसे एआई को लेकर आगे बढ़ सकते हैं? Yeah, we have just seen that impressive AI Impact Summit, which India hosted last week. Lithuania was represented by Ministry of Economy and Innovation, and of course the whole talk was about AI. If you follow the media here, I'm sure you have, everything was about AI. So it is definitely a topic that is very widely discussed, and it's the area which is transforming our lives very fast. What I can say is that Europe, including Lithuania and India, have to have a very strong dialogue on AI on two accounts. First of all, it's the regulatory aspect of AI, how we can make it safe and responsible, how, and that was, a very frequent motive in all the speakers, speeches last week, how a human has to preserve, the edge over technology, not to allow it to be used for bad purposes. So the regulatory dialogue is hugely important, and that's where the two big players, India and EU, have to have very important conversation, which has already started. Of course, there have been 3 AI summits before, but India's summit was in fact unprecedented by scale and that scope. But also in terms of cooperating in AI-related businesses, we also saw a lot of potentials. We do have companies on AI working in India already, and I'm sure Indian companies also are going global in AI, and AI is integrated in literally any other business. So this is very much required just to simply create common solutions for common problems in agriculture, in in smooth passage of in smooth connections in businesses, in anything, but at the same time retaining the human control over over technology and countering the bad actors. That's another thing, because AI as such can be easily misused by rogue actors around the world, and can of course create a lot of troubles for all of us. चलिए एक आखिरी में मैं 2-3 सवाल आपके व्यक्तिगत कुछ पूछ लेता हूँ। आप भारत को अपनी कर्म भूमि और दूसरा घर मानती है, यहाँ रहकर आपके राजनीतिक और व्यक्तिगत अनुभव क्या रहे? हाँ, बिल्कुल है, ये मेरा कर्म भूमि है, क्योंकि हर बार मैं इंडिया आती हूँ महसूस हो रहा है कि ये मेरा घर है. As simple as that. Maybe it's a long connection. 30 साल का connection हो गया. Or maybe something else, as we say,
The fact that I really fell in love with my first movie led me to a much more serious interest, and I really started having, very serious, this, गंभीर रुचि हो गई. And then I started reading everything, and then I think that, it's such a great civilization. It's such a unique, part of humanity, which I know a little bit. I don't claim to understand and know all about नहीं, पर India. फिर भी आप हिंदी बोल लेती हैं अच्छी. But I'm still trying, and I think it's really the diversity of India, the linguistic, cultural, societal, setups that exist in different parts of India, which somehow still make the unique civilization, and it comprises what, 1/5 of humanity. So I think it's very important. So I also, when I go home, I also advocate taking more interest in India, because you are 1/5 of us, and we need to understand each other. At the same time, in India, I also engage a lot with young people, because I think they also need to understand what Europe stands for, what Europe is, because there are so many people who come to Europe. So, this understanding is very much required. मैं एक दो क्वेश्चन इसी में ऐड करना चाहता हूँ. आपके फेवरेट बॉलीवुड एक्टर और एक्ट्रेस कौन है, या पसंद करती हो जिन्हें कि हाँ ये अच्छा अभिनय करते हैं ये? Actor, I think, well, it's difficult to say. It's between Amitabh Bachchan and Dharmendra. I'm very old-fashioned, but I think it's a classics, which is. And actresses, Shabana Azmi, who I have a pleasure of knowing, and I think Rekha, which both in each own way stand for, the icons and the ideals and the beauty of Bollywood. फेवरेट मूवी भी बता दीजिए, 2-3. उमराव जान. उमराव जान. Yeah. आपको बहुत अच्छी लगती है उमराव जान. चलिए. ये मेरा पहला इंडियन फिल्म था. अच्छा, उमराव जान. अच्छा, मतलब वो अच्छा पुरानी वाली उमराव क्या? हाँ, पुरानी वाले. मैंने कहा, मैं 11 साल की लड़की थी जब मैंने उमराव जान देखी, और 3 तो साल पहली बार देखी और पहली पसंद हो गई उमराव जान आपके? हाँ. और 3 साल पहले मेरा मुजफ्फर अली से मुलाकात था, और मैं उनको बताया मेरा स्टोरी है. I told him, sir, you are responsible for me coming to India and remaining with India. आप संस्कृत भी पढ़ती हैं? थोड़ा सा, हाँ थोड़ा. अच्छा, लेकिन संस्कृत में बात नहीं करती, सिर्फ पढ़ती. संस्कृत मतलब आप रीड कर लेती है संस्कृत? हाँ, ये कहाँ से सीखा आपने संस्कृत? हिंदी तो आप सीख यूनिवर्सिटी में. यूनिवर्सिटी में? हम जब मैंने विल्न्यूस यूनिवर्सिटी ज्वाइन की, संस्कृत की कोर्स शुरू की गया, और मैंने ये कोर्स ज्वाइन की. एक आखिरी सवाल आपसे, जिस तरह से संस्कृत और लिथुआनियन जो लैंग्वेज है वो लगभग सिमिलर है ऐसा कहा जाता है, इन दोनों संस्कृतियों को आपस में लाने के लिए आप क्या कर रही हैं? I think this is the biggest historical riddle. पहेली, हाँ, पहेली है, right? ये ऐतिहासिक पहेली है. It definitely shows to our common origins of our languages. Because the connection is not just words. Words can travel. You have a lot of Sanskrit in Thai language, for example, or in Bahasa Indonesia, right? But this grammatical structure, that is where this connection is striking. And I have to say, I learned many languages. I studied many languages in my life. Sanskrit studies were the only case when I could, trying to remember, something in the new language, I could refer back to my own mother tongue. Especially the declension system, where you have to have this. So we have, for example, the word for God, which is devas. So it's devas in Sanskrit. So the way you decline the declination goes for the God is devas, devo, deva, devo, deva, and it's just almost identical. That's why I think the greatest similarities stem. देखिए, जिस तरह से जो डियाना है वो यूरोपियन एम्बेसडर है, लिथुआनिया से आती है, और हिंदी के प्रति इनका प्रेम और संस्कृत के प्रति भी आप देख सकते हैं किस तरह से ये लगातार हिंदी बोलने की कोशिश कर रही है. हिंदी बोलती भी और बहुत अच्छा बोलती है, कविताएं भी सुनाती है, गाने भी सुनाती हैं, बॉलीवुड मूवीज़ भी देखती हैं,
और जिस तरह से इन्होंने हमारे प्रश्नों का उत्तर दिया, ये वाकई कमाल है। कह सकते हैं ना कि अब ये हमारे बीच की ही हो गई अगर कहा जाए तो, क्योंकि ये हिंदी तो बहुत स्पष्ट रूप से समझती है। अगर कोई भी, हालांकि मैंने आपने देखा होगा कि सारे सवाल मैं इनसे हिंदी में पूछ रहा था और बड़े बेबाकी से वो जवाब दे रही थी, और हिंदी इतनी अच्छी तरह समझती है कि मतलब इन्होंने कहा था मुझे कि मुझे आप हिंदी में ही सवाल पूछना, तो मैं भी हिंदी में ही इनके लिए सवाल तैयार करके लाया था। मैडम, न्यूज़ 18 से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपके लिए भी इस कॉन्वर्सेशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मेरी साइड से थैंक यू।